everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna do this look for you guys. This is actually Deepika Padukone inspired makeup look, which she carried one day in her Cannes Film Festival 2019. So let's start it. So first of all, I'm taking this moisturizing spray. This is from Miniso. It is very handy. So I'm gonna spray this. Then I'm taking this primer. This is a porfade primer from Beautyfybyamna, and applying this on usual areas where I have pores. After that, for a foundation, I'm taking this Loreal Infallible 24 hours foundation in the shade 015. I'll apply this with the blender ताकि वो नेचुरल लगे और प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए. दिस इज़ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर एक्चुअली. इसको मैं प्रॉपर्ली अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. बहुत हाई कवरेज भी नहीं चाहिए, बहुत लो कम भी नहीं चाहिए, बस medium coverage I want. उसके बाद to set my face I'm taking this MAC Studio Fix. This is in the shade NC20. इससे I'll set my face. I'll not bake, I'll just set my face क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा base apply नहीं किया है. So I'll set my face properly with this, like here I'm doing. उसके बाद after this I'll move toward my eyes. For eyes I'll take this kind of a, first of all I'll do my brows. I'm taking the Maxfactor की palette. इससे मैं I'll fill my eyebrows. ठीक है. After filling my eyebrows I'll prep my eyelids. For that I'm using Sweet Touch London का concealer. This is in the shade beige 24. इसको मैं इससे से मैं अपनी आईब्रोज जो है वो क्लीन करूँगी और अपनी आईलिड्स को इसी से मैं प्राइम करूँगी, प्रेप करूँगी, ताकि जो चीज़ पे आप अप्लाई करें आँखों पे वो प्रॉपरली पॉप करे. ठीक है. सेटिंग दैट कंसीलर यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेके मैं उसको सेट करूँगी ताकि वो इजीली आई शेडोज़ अप्लाई हो सके. फिर आई विल टेक दिस ब्रश. उसके बाद मैं ये कॉन्टूरिंग शेड लूँगी क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर आई शेडो नहीं चाहिए, जस्ट अपनी क्रीज़ में और थोड़ा सा अपनी लिड पे लाइट सा हिंट चाहिए. तो आई विल अप्लाई दिस ऑन माई क्रीज़. एंड उसके बाद आई एम गोना टेक this liquid eyeliner. This is from by Elegant Girl. I got this from China. I don't know whether it's available here or not, but this is a very good eyeliner. इसकी बहुत टिप बहुत fine है. So I'm applying the liner. इसको बहुत precisely apply करना होगा because this is a reverse wing liner. तो but it's not that difficult. So here I'm applying that. Trying to applying that. I hope कि मैं सही से कर लूँ. ठीक है. उसके बाद I'm gonna take this jumbo eye काजल पेंसिल. इससे मैं अपनी फिल करूँगी. ठीक है. और मैं टाइट लाइन करूँगी बिकॉज दीपिका ने ऊपर लैश लाइन पे लाइनर नहीं था, बट देयर वाज टाइट लाइन हुई थी. तो फिर देयर वाज नो फॉल्सीज शी वाज वेयरिंग. ठीक है. बट मस्कारा बहुत लगा हुआ था. सो आई एम अप्लाइंग दिस मस्कारा, कोट्स एंड कोट ऑफ मस्कारा. दिस इज़ मेबेलिन फॉल्सीज. आई एम टेकिंग दिस क्लीन स्पूली से मैं अपनी आईलैशेस को सेपरेट कर रही हूँ. उसके बाद आई एम गोना अगेन टेक दैट ब्रश. उसके बाद आई एम टेकिंग द सेम कंसीलर और मैं उससे अपनी आइज़ को कंसील कर रही हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग माई आइज़ again back to my face. So again taking the same damn beauty blender, I'll blend this concealer in. For blush I'm taking this blush brush and I'm taking the Sleek Cosmetics ka blush in the shade rose gold. I'll apply that. So now for highlighter I'm taking this brush. This is a highlighter brush from Beautyfybyamna, and I'm taking the highlighter from Makeup Revolution. This is their Pro Illuminate highlighter, and applying this on the apple of my cheeks, on my nose, and some on my forehead also because I wanted a glow. So after applying the highlighter I'll move towards my lips. For lips I'll take this P2 Cosmetics lipstick. This is in the shade 140. I'll apply this. इसको फिर थोड़ा सा लाइट करने के लिए बिकॉज ये थोड़ी सी डार्क थी. I'm taking the Sleek Cosmetics की matte lipstick in the shade Bare All. So I've applied this.
over that. Now I'm again applying the highlighter because I wanted more glow. Here everything is done. So now I forgot to contour my face. Here I'm bronzing after doing my makeup. I wanted this. So here I'm done. This is the final look, guys. I don't know, I'm not very close to her, but I tried. I hope you guys like this look and you guys enjoyed this video. Please give it a thumbs up and subscribe to my channel and press the bell icon below so that you'll get notified whenever I'll upload a new video. Bye, love you all.